संघर्ष की जो चलता है, यह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। जेसन्स एकेडमी नाम लेते ही हमारे डायरेक्टर सर एवं प्रिंसिपल महोदया की मेहनत व लगन सभी के समक्ष आ जाती है। हमारे डायरेक्टर सर श्री जेसन्स जोसेफ सर कई प्रतिभाओं के धनी हैं। सर को सन 2018 में रामजी महाजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर ने कैंसर पेशेंट की हेल्प के लिए एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर एक बहुत अच्छे लेखक भी है। सर ने अंग्रेजी ग्रामर बुक का लेख कार्य भी किया है। सर के द्वारा विद्यालय में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी पालक ने अपनी अपनी समस्या बताकर उसके निवारण भी पाए। ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे डायरेक्टर श्री जेसन जोसेफ सर को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और दो शब्द कहें। I would like to call on stage an eminent personality, the one who has put the foundation of this school, an ideal, a person who taught us true meaning of hard work. He is playing the part of guiding us since 8 years, who has been furnished with Ramji Mahajan Smriti Award and Cancer Indian Foundation. He is also wordsmith of New English Grammar. Our idealized director sir to kindly come upon the stage to say a few words. Very good evening to one and all. Our most respected chief guest, who is not yet reached here because of his busy schedule, Honorable Minister for Tourism and Narmada Valley Development, Surendra Singh Baghel ji. Special guest, Shri Rajendra Motian ji, educationalist and social worker. Reverend Pastor Abraham, my colleagues Roshan sir, Patil sir and Kadambari sir, distinguished invitees, dear parents, my beloved children. Indeed, I am very happy today to address you all in this beautiful evening on the occasion of 8th annual day of Jason's Academy. Long 8 years back, when we started the school, we have nothing in our hand, only hard work. And I feel proud to say that hard work has proved that only hard work can win the world, nothing else. The hard work won the world and you all supported. Your cooperation, your loving, kind and great cooperation to school made the school coming into the level of having 1,200 children now. And I am sure this is not the end. We have to again work hard. As I tell every time to my teachers, that every day is a day for great challenges. Every day is a great day for fulfilling our challenges. And we have great challenges ahead. In this auspicious occasion, I would like to thank my dear parents who trust us, who believe us, who have confidence in us and send the children and making the children into a very, very valuable human being and very productive and wonderful citizen of our country. And also our children, our teachers are working hard to make these children the best future citizens of our country.
I would like to thank every and each personality who cooperated for Jason's Academy, who kinded hard for the upliftment of or the success of Jason's Academy. And also, I extend my warm greetings to all the parents, all the children who showcase their great talents on this stage. It is not easy that 450 students are coming up on the stage. 450 बच्चों को इस स्टेज पर लेके आना, उसको अपने टैलेंट्स को प्रभावित करना और शोकेस दिखाना, ये बहुत अचीवमेंट मैं मानता हूँ. इस अचीवमेंट के पीछे हमारा बहुत कठिन वर्क, हार्ड वर्क है. इसके पीछे हमारा टीचरों का बहुत हार्ड वर्क है. मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, एक बार जोरदार तालियों से और टीचरों को आप धन्यवाद दे, थैंक्स दे. और आपका ये तालियों का खड़खड़ाहट और क्लैपिंग द hands, please go on the years to come. And I would like to quote the poem which I always remember, Robert Frost, one English poet's poem. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. The woods are lovely, dark and the woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, to go miles and miles before I sleep. Thank you. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.